Recording in progress. जय हिंद। जैसे हम हमेशा प्रोग्राम की शुरुआत एक गीता के श्लोक से करते हैं, तो आज हम लोग गीता के तीसरे अध्याय के 14वें पद की श्लोक की बात करेंगे। तीसरा अध्याय कर्मयोग पे ऊपर है और जो श्लोक है वो अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इसका अर्थ है कि समुद्र संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते वाला है। From food comes forth beings, and from rain food is produced. From sacrifice arises rain, and sacrifice is born of action. एक और मुझे कहना है कि 15 और 19 जनवरी को पॉजिटिव थिंकिंग इंडिया इज वन फैमिली, वर्ल्ड इज वन होम, उसके तहत मीडिया कॉन्फ्रेंस 15 जनवरी 2025 को होनी है और 19 जनवरी को स्नेह मिलन होने वाला है। ये जो प्रोग्राम है वो प्रवासी भारतीय दिवस के तहत है और हमारे साथ प्रवासी भारतीय जुड़ जाएंगे। तो आप सबको आमंत्रण देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आप काइंडली अपनी उपस्थिति रखिए। वंदे मातरम। वेलकम टू 289th webinar of Ram Janaki Sansthan Positive Broadcasting House. Our objective is to propagate positivity in society, and we are doing it for last 10 years. We propose to continue doing it in the form of Amrit Kal Ka Sakaratmak Bharat till the year 2047. Today's webinar is on an important subject of consumer right on wholesome and safe food, यानी उपभोक्ता स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित भोजन का अधिकार। What are the issues? Indians spend approximately 32% on their food basket, while they approximately 17%. So you can say we spend twice as much. Furthermore, food prices are disproportionately high in our country. While food happens to be the cheapest commodity in most part of the world, in India it is not so. On top of this, the underprivileged section of society lacks sufficient and wholesome food, and many households cannot afford basic meal, whereas our food processing infrastructure leads to high wastage.
While the government is taking several measures to improve food security, and yet many people must go sleep empty stomach. What should be done? India should become the food basket of the world. Nearly 10 to 15% of total grain production is wasted post-harvest due to insufficient infrastructure, storage, and transportation. The intermediaries do not allow farmers a decent price. We need the latest skills, food processing equipment, and technology. It is important to differentiate between food processing and processed food. Food processing makes food edible with longer shelf life. Processed food are packed and with preservatives and harmful substances. The demand for processed food is rising, leading to health issues, and therefore Indians need to inculcate healthy food habits. To enlighten us on the subject, we have eminent experts. Dr. Nirmal Kumar Ganguly is no stranger. He is our chief guest. He is the former DG of the ICMR and former chairman of the Apex Technical Committee of the Food Safety and Standards Authority of India. I remember, Dr. Ganguly, you headed the special interest group leadership in shaping policies for Ayush in Mahamana Declaration, in which you described how food and nutrition form a central fulcrum of all healthcare systems. This is what I remember. We also have Ms. Dilnawaz Varyaba. She is our keynote speaker. She is an environmentalist working on sustainable development. We'll hear more from her. As always, the Ram Janaki SANSTHAN Positive Broadcasting House Advisor and Guiding Light, Professor Bijon Kumar Misra, is International Consumer Policy Expert and founder of the Consumer Online Foundation, will moderate. And our sister Beena Jain, Chairman of Healthy You Foundation, will propose vote of thanks. May I now invite Bijonda to moderate the webinar. Vande Matram. Thank you, Praful Bhai. Thanks a lot. Lovely kickoff you have done. As usual, Praful Bhai, Ranjan Bain, Namaskar. आपका चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है रंजन बहन? हाँ, बहुत जरूरी है. So I am very happy to be moderating today's webinar. I feel very proud. First, let me congratulate RJS Positive Media, especially the founder and the mover and the shaker, Uday Manna ji. You know, a very active member, and not only active, he is so committed and passionate. So congratulations, Uday Manna ji and all the team members, the family members, for organizing as usual a great event today, Sunday at 11 o'clock. As you know, Sunday is the family day, but still people like us, we take time off and meet at 11 o'clock without any fail every Sunday. So that's a great thing. Let me also first thank Dr. Nirmal Ganguly, who is my mentor. He has been always guiding us as our mentor under the Patient Safety and Access Initiative of India Foundation. Dr. Ganguly, I know him for many, many years, and his one word has always been to me, keep talking the way you talk and speak, don't get scared. But what I am not able to say, you please say that. So I do that very religiously. Where Dr. Ganguly is not able to say certain things, I take it from him and I speak up. And I try to influence the policymakers, convince them to take up Dr. Ganguly's thought process and make it into a policy. He has been a great mentor, let me tell all of you. Then, of course, we have today a newfound friend, a very great newfound friend,
Madam Dilnawaz ji, great to have you with us, and you are so encouraging. And thanks to Dangai ji who got us connected. Dangai ji, you were the source, you were the motivator, and the way she has helped. You will see the upcoming magazine, which is going to talk about genetically modified food. The way she has contributed, and Mr. Dangai has contributed, it's an immense. And of course, as I said, we can't do without Beena ji. The force of getting all the women together, the founder, the former, I would say, the president of All India Women's Conference, which is the largest NGO of women in the world. And she has led a very active life leading that group. And we are all very happy to have her also with us. And of course, all my friends, Ishaq Khan ji, Kuldeep ji, many of our Dr. Sahu, from the dope testing laboratory or National Dope Testing Laboratory, a great scientist, working on setting up a center of excellence of laboratories in the country. So all of them are there. But let me tell you in brief, before I request our, keynote speaker, Madam Dilnawaz ji to speak. I want to tell you all about something, the story of how Food Safety and Standards Authority was born. It was in the year around 2000, you can say 2005, 2006. We used to be very active within the Food Adulteration Act. Under the Food Adulteration Act, there is to be a body called CCFS, Central Committee on Food Standards. And we as consumer groups used to be invited to be part of that. Dr. Ganguly will recall, and I still remember how much debate we used to have there in terms of setting standards. But the Food Adulteration Act, which was there in our country at that point of time, it was a British Raj legislation. It was an Inspector Raj driven legislation where there was nothing but somebody coming and breathing over your shoulder and imposing fine or scaring you and not allowing you to be creative in terms of ensuring that the food is safe and the food is wholesome and the food produced in the country is accessible and affordable. It never looked at all those issues. Then we started having a ministry called Ministry of Food Processing. It was earlier attached to the Ministry of Agriculture, and then later on it got bifurcated, it became a separate ministry. Earlier it was part of the Agriculture Ministry. Why I'm telling you all this background? Because many of you may not know that how Food Safety Authority was born. It took us more than 10 to 15 years to form the Food Safety Act. And that act was given to the Ministry of Food Processing of all the ministries to draft their first law or the draft bill to be presented to the Parliament. And when this was getting presented to the Parliament after 10 to 15 years of struggle to make that law, there was a huge, kind of a pressure on the government at that point of time to make Food Safety Authority part of the Food Processing Ministry. They tried to promote Food Safety Authority to become part of the Food Processing Ministry. And I recall the consumer groups came forward and in a very vigorous manner, pan-India, we did press conferences to ensure that Food Safety Authority, the law which is coming into force, should not be part of the Food Processing Ministry because that ministry looks after the interests of the industry. It doesn't look after the interest of healthy food or food safety related matters and things like that. So there was a huge kind of a pressure by Subodh Khan Sai, the then minister, to convince the Prime Minister to make this a part of the Food Processing Ministry. But then finally we won. It went to the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and Dr. Manmohan Singh agreed to all the pressure because he had constituted several committees. It even went up to a parliamentary committee. Ram Gopal Yadav, I still remember, he was the chair of that parliamentary committee, where we deposed before them.
He also constituted a Mashalkar committee under the Planning Commission and made Montek Singh to look at these issues in terms of where this law should be parked. But finally, I'm happy to tell you all it got parked under the Health Ministry. But the most unfortunate thing is, from the time Health Ministry has taken it over, the Food Safety Authority has never got, and I was very fortunate to be nominated as a founding member of the Food Safety Authority representing the consumers in the authority. And in the first 5 years where I was there, from 2008 to 2013, there was mostly administrative activities which were being carried out in the authority meetings, but nothing to do with policies and standards and things like that. But then, of course, we started slowly picking up. And I still remember, there were very dynamic chairpersons who were nominated as chairpersons of Food Safety Authority, who were former secretary to the Government of India in the Ministry of Health and other ministries, who came as chairperson. They were very dynamic CEOs who were appointed. But lately, I find the Food Safety Authority, especially the state governments, the state authorities, are not taking up this matter very seriously. Because in my view, wholesome food, which is the preamble of Food Safety and Standards Authority in terms of wholesome food made accessible to the citizens in a affordable manner, is actually not happening, because the authorities which are responsible to ensure safety of the citizens in terms of quality of food are not becoming transparent and accountable. The biggest challenge is, how do you make systems transparent, accountable, and credible? We as citizens, we want wholesome food. India is self-sufficient in food. In fact, we are also exporting food, all over but still we have 30% of our population, who are not able to access wholesome food. They are not able to understand what is wholesome food. So there's a huge amount of work which needs to be done. Government is trying their best to do a lot of, interventions in terms of empowering the citizens to access wholesome food and in a sustainable manner. But there is still a lot needs to be done in terms of engaging with citizens. You see, I'm sure, we will all agree that we are not very much being encouraged to be participating in these policy making bodies or participating in activities where at the ground level we are able to make people access wholesome food. Now, without wasting any more time, and because we try to make it for 1 hour this conversation, but it invariably goes up to 1.5 hours, and we have a lot of question answers from the participants. We encourage people to ask questions. So I would not like to waste any more time, but to request Madam Denawaz Variava to kindly come and give the keynote address. And I would request all participants, either you can put your question on the chat box or you can raise your hand, and we will request you to ask the question to the speakers. So we start with Madam Delawaz ji as the keynote speaker. Madam, the mic is yours. Please unmute and come. You have to unmute. You have to unmute. The backend team should. Am I unmuted now? Yes, yes, we can hear you Okay. Now, first of all, I'd like to say how absolutely delighted I am to meet with all of you who I consider now friends on a journey that we are all taking together in the service of the people of our country. And beyond our people, I think when we make a healthy life for human beings, we also make a healthy environment, and therefore it's healthy for all other species as well. As Professor Bejan said,
I did start my journey from the environment field. I was chief executive of World Wildlife Fund India and on various government committees. And in the course of that, I had occasion to meet Dr. M.S. Swaminathan. And I was surprised to receive an invitation in 2003 to be the chair of the working group on the ecological foundations for sustainable agriculture. And this was for the government of Maharashtra 25-year action plan on agriculture. I was both concerned about how I would learn about agriculture because the committee had been meeting for 11 months and they hadn't been able to trace me because I had shifted residence to Delhi. And also, within 1 month, we had to put together a report. I had an excellent committee and we did put it forward. And in that process, I learned that chemical farmers and genetically farmers who are using genetically modified crops later on, when I continued to take an interest in this subject, were committing suicide. Whereas organic farmers, we hadn't received a single report of agriculture-related suicide in my committee when we were working. So I really started this journey from the other end, from the production end, that how do we look at sustainability for the farming community? And the sustainability really has three pillars, I would say: economic, economy, ecology, and equity. If you provide these three things, then you will have sustainability. But during this journey, I found that farmers were not willing to shift away from the chemical. They were trapped in high-cost, high-risk agriculture. So I started organic kitchen gardens for nutrition and found that this was addressing the issue of malnutrition-based anemia, nutritional deficiency anemia. So my own trust has been providing training on this. And at the last, we started in 2016. And at last count, we had about 660 or 70 NGOs whom we had trained, and about 5,000 schools, and about 37,000 kitchen gardens, which were providing safe food to the households. In this journey, by evolutionary process, one began to look at toxicity in food, the role of pesticides, and what was very attractive to me to begin with was the fact that genetically modified crops were supposed to reduce pesticide use and increase yield, improve climate resilience, and a whole lot of other things which were being projected by the GM corporates. So my initial response to GM was positive, that if this is going to have this kind of impact, then the kind of poisoning of water, of soil, and of food, which was taking place through the pesticide industry, would be diminished by the introduction of genetically modified crops, and good for the environment, good for human beings, because it was supposed to also increase yield, and also, of course, good for all species. In going into this, Jairam Ramesh, who was the environment minister, had faced a lot of flack because the genetic engineering approval committee, at that time it was called the approval committee, had sanctioned BT brinjal. And I thought, let me educate myself. So I went to Ahmedabad and attended one of the public hearings which he had held.
And that was the start of my learning on GM. I spent many years just reading up on it, and in 2013 published a small booklet, which I need to now revise, to try and demystify what was happening. And in demystifying, what I would like to say is that first, dealing with the claims that are made, I'm afraid these are just hype. There have been studies from 2008 onwards which have shown that GM, genetic modification, in no way increases either the intrinsic yield or the operational yield. First study was by the Union of Concerned Scientists in 2008. Thereafter, there have been a number of other studies showing that non-GM Europe has the same or sometimes even better yields than the GM USA, where genetic modification is in 80 to 90% of 4 key crops, which is the soya, corn, cotton, and canola. And this has therefore infiltrated all foods in terms of your oil that is used, in terms of the sugar content. Sugar beets are also genetically modified. Whereas Europe has been resisting very vigorously despite all the pressure that has been exerted. And as a result, even today, from the time that GM crops were introduced in 1996 till now, only about 6 countries are accounting for 93% of all the GM crops grown in the world. They have never been able to persuade more than 30 countries. That was the highest. I think it's down to 27 now, to adopt because of the precautionary principle, which is that if any kind of intervention is likely to cause harm to health or the environment, the burden of proof must be on the person promoting a crop, promoting that technology. And this is most important for an irreversible technology like GM, because once you have a living organism, it will spread by pollination, by seed admixture, in countries like India, by shared equipment being used, and most of all, by the marketing strategies of those who have the maximum to gain from these patented seeds which are licensed out to others. If we look at the yield, you will find that out of 72 countries, we adopted BT cotton in 2002, after it was illegally spread for a few years. As a fait accompli, it was accepted. And the current situation, Index Mundi gives the yields of cotton by country. Out of 72 countries, India ranks at, I think, 36. Ahead of us are a whole lot of countries who are not growing GM cotton. Similarly, now when mustard is being sought to be genetically modified, and that will affect us on a huge scale, because cottonseed oil is, of course, a problem. But when you go to mustard, it is a problem for everybody, because it is used in terms of leaves, oil, seed, and so on. So when you look at it, you will find that the highest yielding countries are not the ones who are using the technology for genetic modification. And therefore, on yield grounds, there is no grounds for it. What does GM actually do? It can perhaps do all the things that it is being projected to do, but as of today, 99% of GM crops grown worldwide have got only 2 traits. Either they produce a poison in every part of the plant, which is BT, Bacillus thuringiensis bacterium has been introduced,
or they tolerate the spraying of a herbicide, which is a weed killer, which goes into the plant by surfactants. It's induced to go even more effectively into the plant. And therefore, 88% actually increases the spraying of a harmful chemical. Now, the impacts of that, if the United Nations Special Rapporteur on Food and Pesticides under the Human Rights Commission has given a paper in 2017 on all the ill effects of pesticides. And there are studies thereafter which also show that cancer, the World Health Organization's cancer research has declared it a probable carcinogen. Glyphosate, which is the main herbicide, is a probable carcinogen. There are studies showing very high correlations between the use of glyphosate and the spread of other illnesses, organ damage, kidney problem, kidney disease, autism, Alzheimer's, a number of other illnesses. And actually, I've almost finished my 10 minutes. So do I have the liberty to carry on for another minute or two to wrap up? Please go ahead. Okay. Please go ahead. Yeah. Please go ahead. So what is happening now is that just as in the early stages, animal studies were showing lesions and other signs of these illnesses, they were dismissed and poo-pooed not only by the corporates, but by trusts set up by them, which are supposed to be benevolent trusts, by the regulators themselves, claiming that genetically modified crops are substantially equivalent to the non-genetically modified. Now, this is false because there are novel proteins that may be created. There is also the problem that while extraction of the DNA is precise, the insertion is imprecise, and therefore the impacts of that are also not known. And of course, as I was, there's antibiotics used in the process. Antibiotic resistance is also therefore has been flagged as a problem. And over 100 doctors in India, there are thousands across the world, but the first major warning was given by doctors in Argentina, medical professionals, FESPROSA, an association of over 30,000 medical professionals, started reporting increased childhood cancers and childhood autism, threefold and fourfold in those areas where glyphosate, which is the herbicide which has been used by Monsanto for its herbicide-resistant crops. This was first flagged by them. It was substantiated by a government study. And unfortunately, although Argentina has slowed down, Brazil is continuing. USA, Canada, Brazil, Argentina, India, and Paraguay are the 6 countries which have 93% of GM crop grown. China has cut down to start. It was an early starter much before us, but now it is less than 25% of India's GM crop area. So a number of the European countries which had started have stopped. 17 of the 20 most developed countries refuse to grow GM crops, but we are under constant pressure in India, constant pressure from US and by trusts set up by US wealthy financial individuals and institutions to go in for genetic modification under the claim that it is the most advanced modern technology, etc. It is not. And in fact, the initiative taken by our Prime Minister to promote natural farming
is to be really welcomed, because there are studies done by the Indian Council of Agricultural Research itself, which have shown that within 3 years of doing organic farming or natural farming, the yields are higher than for chemical farming because the soil revives. With that, of course, the nutritional content of crops improves. The pesticide and toxic impacts, which are there from the Green Revolution model of agriculture, reduce. And therefore, this is actually the best pathway for India, because we have the largest number of organic farmers in the world as of today. We have the second largest area under organic farming after Australia, and we are yet not even in the top 15 of the organic crop exporting countries. If we want to double farmers' income, that is a way for us to go. The world wants healthy food. And the way in which I find that even in India, the way in which my own work with just organic kitchen gardens has grown, it is just shows that particularly after COVID, people have understood that a strong immune system based on healthy food is really what is needed. Whatever we can do to promote agroecology, chemical-free farming, will be the greatest service that can be done. And I am grateful to Dr. Farokh Udwadia and the 100 other doctors who wrote to the Prime Minister against the GM mustard, and also giving all this kind of details to him. I don't know whether the letter ever reached him. I think if we can get these things to the Prime Minister, it will make a great difference, and I count on all of you to be of help in this. Thank you. I will answer questions afterwards. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Your pilot or your experiment on kitchen garden is definitely a matter which we all should look at, and how we sort of can support you to take that forward. While we are not against science, we are definitely against, disruptive science which is not in the interest of the citizens. So we always want to understand that the science which we bring in should enable citizens to access better quality products and services, rather than promoting certain science promoted by certain countries for their interest and for their enrichment. We become the guinea pigs of that science. So we are definitely with you in terms of GMO. As you know, India has still till date has banned GMO in the country, but they are encouraging farmers to start growing. It started with BT cotton, as you very rightly said. Now they're looking at mustard. We have to be very careful and alert, and we have to understand how we intervene. Let me give you a small example. When you write one letter, sometimes it gets missed out. We as a campaign policy, we always looked at tools like flooding the Prime Minister's office with postcards written by lakhs of people. And we have always got, in fact, in that Food Safety Authority, when it was being tried to be shifted to food processing, and we wanted it to be with the Health Ministry, we started the postcard campaign, and it worked. When we started talking about universal health coverage, we started the postcard campaign. It worked. The BJP government, when it came to power in 2014, it made sure that it implements it. By 2018, it got implemented, because in their manifesto, universal health coverage was one of their points. And we built on that manifesto promise, and we sent thousands of postcards to the Prime Minister's office. So I would request you to consider this campaign to encourage students, especially youths from colleges and schools, to write postcards to the Prime Minister on this issue of GMO in mustard seed. So we should try to think.
Now we have a great scientist of our country as our chief guest. None other than Dr. Nirmal Ganguly, who is well known, not only in India, but globally. And as you spoke, Dilwasji, very nicely, you spoke about how science is being manipulated and not in the interest of the citizens. So who could be better than Dr. Nirmal Ganguly to talk about how wholesome food in the country can be ensured to be made accessible, and what are those barriers and challenges which we have in our country. And as you have been, Dr. Ganguly, the chairman of the Apex Committee on Scientific Matters within the Food Safety Authority, who could be better than you to guide us and tell us? So Dr. Nirmal Ganguly, please unmute and come. The mic is yours. Thank you, Bijon, and thank you all the panelists to be here. And I apologize to Dr. Dilnawaz, Ms. Dilnawaz, that I don't read my WhatsApp because it's mostly 90% things which I don't want to read, but I read my email. So I missed your WhatsApp message, and I apologize for that. Actually, I had no intention of taking up the genetically modified food, but we'll spend 2 minutes on this because I'm also was a biotechnology professor, national biotechnology professor, as well as I am an immunologist also. So I thought that I will give some latest information on this. Actually, I was with Bijan because I'm a foodie. I like food, and food can kill, food can sustain, food is nutrition, food is medicine, food is very, very important. Hence, the food safety is equally important. But Bengalis are addicted to mustard oil, and mustard oil is one of the best oil in the world, because olive oil, which is actually the best oil in the oil, is not suited for Indian cooking because of its boiling point, boiling point. Hence, however, the mustard oil has got all the good qualities of olive oil, but it doesn't have it has got two very bad things in it. One is uric acid, and the other is the glucosinolides. The Deepak Pental, whose thing was under the discussion, created double low by muting these two genes, and all its proteins, all its contents, because we have now machines which can measure it, and none of them there were allergens or there were proteins which had toxic nature, or the proportion of those proteins were changed in this particular thing. So very strong LCMS, MS was used, and to make it resistant to bugs, toxin genes, etc., were used. It was made resistant by new technologies, which doesn't use any toxic material, or it doesn't need any particular pesticide to sustain it. So, in a very important study, because India is a coronary artery disease country, stroke country, the diabetes were capital of all these because of some inherent problem of preterm babies or extreme preterm babies. So there, if you really take Indo-Mediterranean diet, it really brings in liver disease, it brings down liver disease, it makes you little bit more healthy. The mustard has got the least atherogenic index amongst all the oils. So the science is moving very fast, and there is one more advantage of this, that recent science has shown that the extreme preterm babies
are because of the two major ingredients which are deficient in mothers. One is linoleic acid and the linoleic acid, and also the oleic acid in the RBCs. So if you give DHA, which is also not really obtained in a large quantities unless you produce it through the system, you don't know. But if you give DHA, you can prevent these preterm, extreme preterm babies, which make the large amount of population very, very vulnerable. The same way, our mothers need about 30 grams of protein, and this 30 gram of proteins are not available because in the milk we boil the milk, and the many people can't take milk, don't take milk. The vegetarians don't take egg. So the 30 grams of proteins are available in cereals, which are very, very expensive. So it has to be done through the rice. So it is not that these need to be always genetically modified. The hybrid technologies are the variants, rice variants, which are there, as well as a technology which is known as apomixis. They can all that is not a GMO. All of these could be produced, but there is a Bangalore scientist Dr. Anurag Kurupad, who has produced a rice which has got a 15 gram 15% protein per gram. So that is going to take the problem off the shelf. Finally, these years Nobel laureates, Dr. Jennifer Doudna and Dr. Charpentier. Actually, I worked with Dr. Charpentier in one of the discoveries, and they use the CRISPR-Cas method, which is removing a particular gene and introducing the better, healthier gene in that. So they are going to produce the world is consisting of super rich and super poor. India, we have about 300 super rich. I don't know whether in which categories we are, but not in that category, but anywhere in the world. But around 700 to 800 millions are super poor. They don't have even 3 square meals in a day. And majority of the world has a higher hunger index. And so what they are doing, that they are producing the rice, which is eaten the most part of the world, not the wheat mostly. They are making rice, drought-resistant rice with a very nice technology. So the science is moving forward, and we need to move with the science, and we need to create a balance and choosing technologies, choosing products, choosing with the things which will be safe. So my journey with food safety was that of the committee with Mashelkar, committee which Bijan was mentioning. I was part of that committee, and we argued that this should be in the health ministry at that time. We also argued for the drug controller's office, but that didn't change. This got changed, luckily. So few of the things I will bring in that which has really bothered us and the food safety. One of the things which when I took as a DG ICMR, this was mustard oil which was adulterated through the Argemone mexicana seeds, and the sanguinolic acid and sanguinine, which caused the dropsy, was one of the things which was responsible for that. But now there somehow or other, the mixing of oil, which was at one time not allowed, now some policies have changed, and as well as technologies have come up which where we haven't got this particular issue again. The beriberi, which was at one time was also a very major problem, also came because of such few of such issues. My second encounter was
that when it was brought out that our the caramelized non-nutritive drinks, which were I'm not going to tell you the brands. These are there in the market and consumed in a very large quantities. Was that it has pesticides. At that time, even CDC didn't have that. Dr. Pawar's committee tasked me to work it out, and we worked out a method, and we worked out a system in which we found out that in the canned ones and the bottle ones, where the bottle could be little, the cap could be little loose, the environmental things could come in, but the canned one are safe and they do not have much pesticide contents and other contents which cause problem in the food. And that's how we still have those things. But we did two things more. So Miss Indira Nui met us in New York when I was the health minister, and we at that time told her that you should also make nutritive products. You should make nutrition based foods items as well as drinks, and don't push these non-nutritive drinks into the schools, because there are a lot of sugar in this and it can cause obesity. So she agreed, and you sometimes you have to, and in that way, that particular brand came up to produce a lot of other products which are which have got advantages. The second thing which came up to me at that particular time was the sugar substitute, because people wanted to bring down the sugar content, but sugar substitute also are quite harmful, particularly those which use aspartic acid analogs and others. So the stevia and some of the other ones are better, but then sugar substitutes also, we had a movement, and there is a big market on this. And so here also the safety concerns came up, and we came up with those solutions. Third encounter with the food safety which I had was arsenic in the West Bengal food. So arsenic, whenever you change the traditional methods, these days with the GIS, you could really measure the arsenic belt in India. And arsenic belt are in the Madhya Pradesh, Bihar, little bit of Odisha, and West Bengal. Both the Bengals have. So there, the main sustenance is to the shallow water with the ponds. Every house had a pond there, and that's the water which was used. So in that particular scenario, I was also a diarrhea researcher, and what we said that use hand pumps. So hand pumps were made abundant over there, but they were shallow and hand pumps, and they put in air, and the air leached the arsenic out, and the arsenic came into surface. It not only entered the waters, it entered the food chain, and there was a disaster. And very few laboratories could really measure all the isoforms of arsenic, and once it enters food chain, it was very difficult to get it out of the food chain. But we were successful in dealing with that. So when the problem comes, normally you are able to deal with it. Another encounter in the food safety came up when Looks like the electricity has gone out. So friends, while we wait for Dr. Nirmal Ganguly to come back to us, can I request some of you to, if you have any questions, to ask Dilnawaz ji? I'd like to make one observation. You see, Please. on the mustard, there are two things. One is
our natural, over thousands of years, we have an enormous genetic diversity. For instance, on rice, the estimate is between 70,000 to 100,000 varieties of rice were available, and they have different properties. The risk when you try to corporatize any kind of a product, you need to narrow the base so that your publicity, your advertising, your production, all of that can get more effective. So I am delighted to hear that there's somebody working in Bangalore. There's Dr. Debal Deb, who has been conserving rice varieties, which have medicinal properties, which have nutrient properties, etc. So with mustard, the problem that has been there has been that in the process of developing the genetically modified crop, they have inserted a gene that can tolerate the spraying of the herbicide glufosinate, whose impacts, glyphosate has been studied much more. In fact, it has led to 154,000 cases being filed in USA. And Bayer, which has bought over Monsanto, has so far paid $11 billion to settle cancer cases as a result of this herbicide glyphosate. Now, if you use a gene which is a herbicide-tolerant gene, now, no matter through what process you arrive at herbicide tolerance, whether it is GM, whether it's CRISPR, whether it is natural selection, the whole process results in a much, much higher spraying of the herbicide, because farmers find it very easy to do spraying without their crop dying. Everything else dies except that crop. Now, there are implications for bees, pollinators, etc. But there are major implications because that glyphosate or glufosinate gets into our water system, gets into our food. And that is the objection to GM mustard, the use of a herbicide. I just wanted to clarify this. Yeah. You know, what I want to tell you is the most important aspect is, as you very rightly said, the knowledge needs to be disseminated in a simple language which common man can understand. Unfortunately, our campaign in terms of awareness building is not well targeted, due to which the citizens are not aware about the consequences of such science being misused. So, you know, I would like to recognize Vijay Shankar Verma ji. Vijay Shankar ji, I hope you are all right, because you are attending from the bed, I can see. आप अनम्यूट करके आइए, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछिए. And I must tell the speakers that we have people who are bilingual, who are from Hindi speaking belt, so sometimes they are not very friendly with English. So I would like my Hindi speaking participants to kindly also explain in simple language to the participants what our speakers have already covered. So I would start with Vijay Shankar Verma ji. Vijay Shankar ji, I hope you are all right. जी सर, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज तो जो हमारा सेमिनार चल रहा है, मैंने ये लिख रहा हूं, जीएम फूड के बारे में भी एक भाई ने लिखा था, इस पर तो तुरंत सरकार को रोक लगानी चाहिए। ये कीटनाशक जहरीले, इतने जहरीले हम फसलों में प्रयोग कर रहे हैं, और फिर हम उसका उपयोग हमें करना ही है, तो कैंसर, डायबिटीज, विभिन्न बीमारियां जो है हमारे उसी पेस्टिसाइड की वजह से आ रहे हैं। तो इस पर तो सरकार को रोक लगानी चाहिए, इसके लिए विकल्प जो है तैयार करना चाहिए। अब मैं ये देखता हूँ कि कीटनाशक में जैसे कि गोमूत्र है, नीम है, गोमूत्र में नीम के पत्ते दे करके बॉयल करके और उसको तैयार करके कुछ दिन रख करके, और एक मैंने अपने घरों में घर के छतों पर गमले जो है उसमें कुछ पौधे जो लगाए हैं उस पर उसका स्प्रे करते हैं, सारे कीड़े मर जाते हैं और बहुत पौधे बहुत सुंदर अच्छे हो जाते हैं, और उसमें फल भी बहुत अच्छे देते हैं। Thank you very much. So Vijan, I was muted. मुझे
म्यूट हो गया था मुझे, पता नहीं सिस्टम ने कर दिया था। हमको लगता है लोड शेडिंग हो गया था। हाँ, लोड शेडिंग, बट उसके बाद 1 मिनट में आ जाता है, बट वो हमारा सिस्टम चलिए आप म्यूट हो आगे, गया था। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो मैं अब डिबेट में नहीं जाऊंगा उसमें कि जीएम की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या सेफ्टी है, नहीं, वो जो मुझे बोलना था बोल दिया मैंने। बट मैं आगे जाऊंगा कि जहां से मैंने किया था, आर्सेनिक तक आई हैड डेल्ट विद एक और चीज आई थी जिसको कि खेसारी दाल बोलते हैं। उससे देर इज ए टॉक्सिसिटी विच ऑल्सो इज अ वेरी मेजर टॉक्सिसिटी। और हमारे यहाँ पर खेसारी दाल काफी यूज होता है गरीबों में, and there is a toxin there which causes a tremendous problem. And so that also we were able to solve, and there the problem solving was much easier. One was that the traditional Indian method of cooking of the khesari dal, and of course there was another product which was created, which was done through selection, which has a very small quantities of the toxin in the khesari dal. So as you know that food is the food items are dangerous also. One more problem in India which we sorted out, and which we sorted out was that our prawn and our fish population, fish products were rejected by majority of the countries because they had salmonella, they had other things. So we created a testing system now in the Telangana state. There is in every 2 kilometers there is a there is a PCR based laboratory. So they actually are testing, and now our prawn cultures and our others have gone out. But there are vaccines which Norwegians use. We don't have those particular technologies over here. But testing it properly and taking proper precautions have enhanced these things. Then another area which we saved many times we have to save our industry also, our economy also. Like we didn't touch the mango pulp. Mango pulp, at the moment we have touched that, we have created systems which will produce, because we looked at the deep water pollution which are done by the industries, particularly the industries which are producing those soft drinks. And through that we could really help in the mango pulp area also. So the moving forward, our tea industry was really affected because we put up 150 microgram of the iron filing there. The Sri Lanka, who is our major competitor, they put it about 250 of that or 500 of that. So they were selling it to the world, and we were not able to sell it. But then again, we sorted out and created a monograph for that. We also looked at the heavy metal toxicity, particularly the toxicity which goes on the food because they are on the roadside, fields are on the roadside. And at that time, our plumbing was a lead plumbing. The paints which are used have got lead. We have mercury we had cadmium in our rice field. We also put up those standards so that these are safe. The metal toxicity are not there in our food. The milk also had a problem, that milk had a melamine, and milk had urea, and if there was a myth of A1 A2 milk, we also sorted those particular things out so that the milk, which is a very important ingredient in our life, is safer. And we created test systems which are much more easier to really measure. But again, the economic part comes into that. In the economic part is one of the major problem that Mr. Prakash Singh Badal at that time telephoned me, because the fat content in the milk differs from the area to area in our country, and they wanted standards which will really will be good for that particular that it will not ruin the economy of
of one particular state versus the other state. So I will like to end by saying that that the food can also be a medicine. And sometimes we have a problem in our country of some of the things which we are traditionally using. Like we were using mulethi, which is known as glycyrrhizin gabra. Now, glycyrrhizin gabra mostly comes from the Afghanistan and Iran in India. And this is useless. It doesn't have the glyceric acid content which are needed. So the ones which come from Vietnam, Ural, and Russia, Ural in Russia and Taiwan are the best variety. So the same happened in many other things which we don't grow but are part of our traditional system. So here we need to have good technologies, and one of the things, Bijan, which you were talking about, and Mr. Seth was also talking about, that we need to create. I will end by saying that because there's only 10 minutes which have been provided to us. I will end by saying that we should be making food safe. We should be making food available. We should we should sometimes look at our traditional things, like there was a surgeon known as Dr. Gopinath. He told me first time he was a cardiothoracic surgeon and created the the bypass surgery in India. He told me that Ganguly, the Indian ghee, the way the Indian ghee is made, it is very healthy. It is not it doesn't have those kind of trans fats. So I said that, are you mad? What are you talking about? But then when we looked at it scientifically, the main harmful thing is the oxidized LDL in the fats, and the way the Indian ghee is made, it has got in the core vitamin E, which doesn't allow those to form. So Indian ghee, the way the Indians used to eat it, that if you fry puri in that, it doesn't remain the same. Indian ghee was taken, either you put it on the dal or you put it on the roti and others. It was not really boiled or heated. So that's the way Indian ghee was taken, and it was useful. So these are some of the things which there has to be a lot of public awareness and public needs which go on. Like somebody was talking about that the urine of the cow and urine of humans also have lot of antiseptic substances in that. So when the people were not using the latrine, we created tank for the urine, and with the urine, the organic farming was done very well. So what I will say, that food is one of the major sustainable thing in the life, but it need to be available. It should not be to everyone. And for that, sometimes you may have to use new technologies, but with the safety, there need to be no compromise. And the way the science is moving at this given moment, so fast, that we need to really marry all our knowledges together and come to do not take any hard stance into these things. Look at what the knowledge is available, test the knowledge, verify the knowledge, and thereby come to a conclusion that everyone gets the food, and the healthy food and the mix, which is important. Salim Yusuf did a pure study which is based on the food and the food practices, like four serving of the raw vegetables in the form of salads or other things, not the way the Indian leafy vegetables and other vegetables in the salad, as well as some cut fruits. They save life. So there have been a lot of food generated. 28 cups of green tea, mind you, not the black tea,
is very useful. There has been public health studies which have saved lives. So with this, I will end my discourse Thank by you. saying Thank you. that we should be rational, we should be pragmatic, and our aim should be that put food to everyone's mouth. And that is very, very important. My mother used to get very upset if we left food in our plate. She used to say that so many people are going without food. And so that is very, very important with the food safety. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. You know, you covered it in a very beautiful manner. Now, as you know, this whole webinar is being telecasted online, also on YouTube. And all my participants and friends who are not joined physically, but they can access this complete proceedings on the YouTube of RJS Positive Media. So having said that, you know, the most important aspect is today we are spending almost about 37% of our budget, home budget, on food, whereas globally it is less than 17%. You know, on an average, it's about 17% of your food budget. So we have to look into, while we encourage commerce, we have to encourage in terms of affordability and accessibility, which is very important. And of course, the most important part is, as I told you right in my beginning, that wholesome food has to be made accessible, not food which are unhealthy and not safe. So we have to work on that. I have already seen a hand being raised by Mr. Dangayach. Please unmute and come, and you may ask your question or share your comments. Kindly be brief. Mr. Dangayach. You have to unmute and come. You have to unmute and come. Your mic is not unmuted. You have to unmute. Dangayach ji. Can the backend team help him? Backend team, I think he's not able to unmute. Yes, now I can unmute. Yeah, good morning. Good morning. Thank you. Thank you. I have got a few remarks. And the first is that we have to really understand the meaning of science. In the name of science, all kinds of unproven, irrational, and other qualified knowledges are being passed on. And we are being probably pushed and pressurized to accept half science as a kind of full knowledge. So first of all, I would like to say that we did not, go purely by the so-called, the scientific advancements, which are a set of qualified knowledges based on many assumptions. So in case of food, in case of healthcare, in case of medicines, everywhere the very same thing is required to be applied. As we saw in the case of COVID, many, I would say, emergency medicines and treatments were just given to the populace at large. And later on, it was realized that these were not, as a matter of fact, rational or proven. The second point is that we are talking about wholesome food. And that is where we have to see that the supply chain itself is in a position to reduce the waste on one hand and keep the food wholesome. Let me go back to our traditional knowledge, wherein dehydration was done of vegetables, fruits, and many other things at the home level or at the community level, which kept the nutrients of the foods, like there may be the various vegetables and fruits intact. Coming from Rajasthan, I can tell you that dehydration was the route adopted by us for increasing the shelf life. हिंदी में भी बोलिए, थोड़ा हिंदी में भी बोलिए. हाँ, तो मैं राजस्थान का हूँ बेजोन जी. तो राजस्थान में जो डिहाइड्रेशन था, डिहाइड्रेशन का तरीका बहुत बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में लगना चाहिए, जिससे खाने की जो चीजें हैं, जिसमें आप सब तरह की चीजें ले सकते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फिश हैं, इन सब की शेल्फ लाइफ भी बढ़े, न्यूट्रिएंट जो है रिटेन भी रहे और कॉस्टिंग भी कम हो. तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो आप डिहाइड्रेट नहीं कर सकते, उसको कई बार आपको जो कोल्ड चेन में रखना जरूरी है टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ. फॉर्चुनेटली रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आज की तारीख में आपको कोल्ड बॉक्सेस मिल जाएंगे, आपको कोल्ड रूम्स बन जाएंगे, आपके कोल्ड स्टोरेजेस बन जाएंगे, जिसकी कीमत मैं ये बताऊंगा कि आपको
ट्रेडिशनल कोल्ड स्टोरेज या ट्रेडिशनल इनसे जो कम होती है इन द ओवरऑल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को सप्लाई चेन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, हमको जो फार्मर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और हमको जो है क्वालिटी का रिटेंशन और जो मैं कहूंगा कि शेल्फ लाइफ का भी सोचना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को समग्र तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है जो आप चाहते हैं वो सब चीजें हो सकती हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर उत्पादन होता है वहीं पर अगर सेमी प्रोसेसिंग, हाफ प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन हो सके तो उससे बहुत बड़ा जो है कंज्यूमर को फायदा होगा। अब रिन्यूएबल एनर्जी के कॉस्ट कम होने से माइक्रो ग्रिड जो रिन्यूएबल बेस्ड हैं वो संभव है, फिजिबल है एंड फाइनेंसिबल है। तो माइक्रो ग्रिड, रूरल माइक्रो ग्रिड एट द लोकल लेवल उनको लगाना बड़ा जरूरी है। उससे किसान जो प्रोड्यूसर है he will not be compelled, he will not be pressurized to sell it cheap। वो कोल्ड स्टोरेज में रख सके, अपने खुद के कोल्ड स्टोरेज में या कम्युनिटी के कोल्ड स्टोरेज में, और उसके बाद में जो है अपने जो है हिसाब से उसको बेच सके, सब तरह से लाभ होगा। और उसके अलावा उसको वहीं पर प्रोसेसिंग कर सके। अब रिन्यूएबल एनर्जी के अप्लायंसेस भी हैं, तो आप जो ग्राइंडर हैं, आपके जो दूसरे जो है मतलब जो दूसरी तरह की जो है प्रोसेसिंग मशीन्स हैं, बड़ी कम कीमत पर वहां पर लगेगी। तो ये हमारी फूड चेन को बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इन सब चीजों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि भी मैंने लास्ट वीक में एक डिसेंट्रलाइजिंग नेट जीरो 2070 प्रोग्राम किया था। उसमें कई लोगों ने जो आके इन चीजों की बातें की जो हमारे फूड चेन के लिए, हमारे जो फार्मर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल बिल्कुल कॉन्फ्रेंस। सही, आपने बिल्कुल सही बताए हैं। इसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हर मिनिस्ट्री को साइलोज में नहीं काम करना चाहिए, उनको जी कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग should work with renewable energy, should work with Ministry of Agriculture, and they should work together on certain projects. They should not be working in silos. And the problem is कि हर मिनिस्ट्री अपना अपना टर्फ को लेकर वो अपना दायरे को केवल सीमित रखता है अपने मिनिस्ट्री को लेकर, वो आगे बढ़कर दूसरे मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप नहीं करते हैं, जिसके चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर गांगुली। एक्चुअली दंगाई जी ने एक और मुद्दा उठाया था विच आई वांट टू, जिसको मैं उभारना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम की कोल्ड स्टोरेजेस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, द फूड पैकेजिंग बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फूड पैकेजिंग में जब भी फूड पैक करते हैं उनमें से गैसेस निकलते हैं जो जल्दी से रॉटिंग करते हैं, तो शेल्फ लाइफ इम्पोर्टेंट है। और पैकेजिंग में बहुत साइंस ने काफी उन्नति किया हुआ। अगर आप हमारे हल्दीराम और बीकानेर भुजिया वालों को देखें, they have gone around the world with their food by improving the packaging, by putting up inert gases in their packages, and which made keep them totally fresh. So ये, और एक इन्होंने बोला जो कि हमने अरागोंडा में किया था, it is a mango growing country और they were very poor in agriculture. So हम लोगों ने उनको फूड पैकेजिंग सिखाया, उनको सप्लाई चेन उनका ठीक किया, सो दैट और जो उनका ज्यादा फ्रूट था, एक्सेस फ्रूट था, वहां पर फूड प्रोसेसिंग वो बना दिए, जिससे कि उन्होंने अचार, मुरब्बे, जूसेस, ये सब बना के उन्होंने बेचना शुरू किया। द होल इकोनॉमी ऑफ द होल प्लेस बिकेम वेरी वेरी एक्टिव। सो इनका यस कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट था, मैं चाहता था कि वेरी इसको एक इंपॉर्टेंट, उदाहरण से मैं इसको बोलूं। सुदीप साहू बहुत जी ही आपने बहुत हाथ बहुत उठाए थे। जो है गांगुली साहब ने सुदीप बहुत साहू सही जी, बताया, बहुत सुदीप सही साहू जी बताया। प्लीज अनम्यूट एंड कम। मैं आ रहा हूं सर, नमस्कार नमस्कार। सर। आपको देख करके बहुत ही ऊर्जा प्राप्त हो रही है और आप बहुत ही खूबसूरत हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देख करके, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का जो डिस्कशन है बहुत ही बेहतरीन है। ये जीएम फूड जो है भारत के लिए अनुकूल नहीं है। ये विदेशी जो वैज्ञानिक हैं और कंट्री जो हैं अपना सामान बेचने के लिए इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये भारत की समझ है कि वो इस्तेमाल करे या ना करे, जबकि इसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ है। कॉटन आ चुका है, बैगन आ चुका है। अब आप सरसों के तेल की बात हो रही है। सरसों के तेल में भारत सरकार ने जो 8% अन्य तेलों की मिलावट का एक प्रावधान था, उसको जब बंद कर दिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही उसको वापस खोल दिया, तो गड़बड़ होनी शुरू हो गई। आपको ये बताना चाहता हूँ कि गांगुली जी की माता जी कहती थी कि खाना नहीं छूटना चाहिए प्लेट के अंदर। मुझे अच्छा लगा। आजकल शादी हो रही है, कार्ड बट रहे हैं,
कार्ड पे ये नहीं लिखाते हैं, कहते मेरे बाबा की शादी में जरूर आना, लेकिन ये लिखवाएं कि भोजन करें मन भर और बर्बाद न करें कण भर। प्लेट पे लिखाइए, पोस्टर लगाइए। जो खाने का आप देखेंगे, जहाँ खाना प्लेट धुलती है वहां पूरा पहाड़ बन जाता है खाने का, 100 आदमी खा सकते हैं उस भोजन को। जी जी इतनी बड़ा बर्बादी। और एक यूरिन की बात करी, यूरिन जो कलेक्ट होता है, सुलभ इंटरनेशनल सेंटर पे मैं गया था, तो वहां पे उन्होंने यूरिन को इतना साफ करके रखा हुआ था कि जो पानी एक रखा था ना बोतल में, वो लग रहा था कि इसको ना पियो, इसको देख लो, इतना बेहतरीन उसको फिल्टर किया हुआ। मतलब कि कमाल की चीज है। और आर्सेनिक पे बात हुई, अन्य चीजों पे बात हुई। मैं ये सीधे बात कहना चाहता हूँ कि एफएसएसआई को जो खाना पकाने के लिए जो साधन इस्तेमाल करते हैं, फसल के लिए पकाते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आजकल उसी तरह से केले आ रहे हैं, सारे इतने बेकार है, रख दीजिए ना, उसमें से बदबू आने लगती है और झाग निकलता है। इतना ही कहना है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत थैंक यू। इनफैक्ट बहुत जरूरी है। दिलवास जी भी कह रही थी कि लोकल जो किचन गार्डन है, हाउ यू कैन बिल्ड अवेयरनेस, ये बहुत जरूरी है। कैसे आप ऑर्गेनिक फूड का एक चलन ला सकते हैं वापस। हमारे इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, एज इट इज सेड, नेक्स्ट टू ऑस्ट्रेलिया ओनली। हम लोग की इतनी ग्रोथ हो रही है, एंड टू इन ऑर्डर टू डेवलप द इकोनॉमी, बहुत जरूरी है लोकल लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का मदद दिलाना, बहुत ही जरूरी है। दीपचंद माथुर जी हमारे कन्वीनर, आप कुछ कहना चाहेंगे? दीपचंद माथुर जी, आप हैं? प्रफुल्ल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? और कोई व्यक्ति कहना चाहेंगे कुछ? प्लीज आप अपना हाथ उठाइए एंड लेट मी लुक एट ऑल माय फ्रेंड्स हु आर हियर। साहू जी हमारे हाँ, प्रफुल्ल भाई। नो, कैनिंग बहुत पॉपुलर है यहाँ पे गुजरात में, खास करके मैंगो जूस का। यू कैन हैव दैट थ्रू आउट द ईयर, एंड सेम इज द चिप्स ऑफ बनाना आल्सो एट द साइड। गंगा जी, दे मैन्युफैक्चर नाउअडेज। गांगुली सर ने और सभी ने बहुत कवर किया है, बहुत अच्छा बोला है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि साइंस के साथ, साइंस तो बढ़ाना ही है, तो जो जीएम फूड है और जो अपना ट्रेडिशनल है, बैलेंस करके ही चलना है, क्योंकि हमें वी हैव टू ग्रो विद साइंस, दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन वेरी गुड। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो किचन गार्डन का है, आजकल समस्या क्या हो रही है कि लोगों के पास गार्डन ही नहीं बच रहा है। एवरीबडी इज लिविंग इन फ्लैट्स। हमें भी याद है, मैं बचपन में था, रियली में एक छोटा सा जगह में सब कुछ उगाया था, और नो यानी पेस्टिसाइड की कोई जरूरत नहीं थी, ना कोई कीड़ा लगता था ना कुछ। एंड मैंने ग्रो किए थे टमाटर, मतलब एवरीथिंग आई हैव ग्रोन अप। एंड वो दिन आज हम लोग सोच के रह जाते हैं, इफ वी हैड सम लैंड वी कैन अगेन एंजॉय, एंड वी कैन एंजॉय द फूड, एंड वी कैन ग्रो इन किचन गार्डन। तो मैं तो यही बोलना। यस, थैंक यू थैंक यू। दिलवास जी, आई अंडरस्टैंड यू हैव टू गो एट 12:45. Yes. 15 minutes. I will just respond to this. Yes. हम अभी ये जो आप कह रहे हैं ना, वो बहुत सही है कि अर्बनाइजेशन जो विलेजेस में है उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 200-250 स्क्वायर फुट के गार्डन में भी पूरा 5 लोगों का हम जो प्रमोट करते हैं, उसमें हम डाइट डाइवर्सिफिकेशन के लिए कहते हैं कि भाई आप 2-3 चीज मत सिर्फ लगाइए, जो चीजों की जरूरत है, जो हमें जो तत्व की जरूरत है, उन सब लगाना है। अर्बन एरिया में अभी मैं भी बम्बई में रहती हूँ, मैं एक वर्टिकल गार्डन बनाया है, सिर्फ 2 फुट बाय 5 फुट हाइट में, जो कई चीजों जो लगाना है वो लगा सकते हैं। और दूसरा है जो माइक्रो ग्रीन्स कहते हैं, वो जो स्प्राउट होते हैं, तो उनको 5-6-7 दिन में हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम रैग पिकर्स के साथ जो यहाँ स्लम्स में रहते हैं, उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है कि कंट्रोल ग्रुप और जो लगाते हैं और खाते हैं, उनमें कुछ फर्क पड़ता है कि उनके हेल्थ में, उनके हेमोग्लोबिन में।
हम हेमोग्लोबिन को क्यों लिया है, एक अनीमिया फ्री इंडिया फोरम बनाया है जिसमें हमारे 670 पार्टनर्स अभी जो है, तो हम उसको एक इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं कि न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो इसका जब 1 साल के बाद मुझे लगता हमारा सही का आंसर आ जाएगा। परंतु हमने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया था गांवों में, वहां तो 1.25 to 1.4 ग्राम्स पर ये इम्प्रूवमेंट हुआ था हेमोग्लोबिन में किचन गार्डन के साथ। अभी माइक्रो ग्रीन से हो जाए तो ये अर्बन के लिए एक अच्छा रास्ता हो जाएगा। मैडम, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इतने इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इतने नॉलेज दे रहे हैं, इसको यदि आप पब्लिश कर सके हिंदी में या अंग्रेजी में और लोगों तक ले जा सके। हाँ जगदम भाई, या प्लीज अनम्यूट करके आइए प्लीज। Dil Niwas ji just now gave a very good speech that urbanization is taking place and there is no space, enough space for growing the home food. I would like to know from her, what about bonsai? Can she give some light on bonsai? Madam, you want to react to that? We have not tried anything with bonsai. It is more a decorative ornamental use that bonsai has got. But what we are trying, what I think we can try, if there is some balcony, some veranda, some little bit of open space, how do you get enough sunlight? If you can keep at a slope, on a sloping basis, different trays, then you can try. I won't say that it has been terribly successful. You can't get a large quantity, but therefore I feel microgreens takes up very little space and can definitely be tried. Veena ji. Veena ji. Just I want to say that I have already tried, madam, this kitchen garden for Jhuggi Jhopri people, in a box. Usme sabji aati hai na, usme. But you know, they can't grow for a family. They have family for 6 people or 4 people and 5 people. But vegetable, they can't grow that much vegetable. So its कहना is very easy, we can say. But even for myself, I tried I have 4 balconies and I tried to grow that vegetables. But it is not possible. Only 1 tomato will come. After 6 months, 1 bangan will come. So it's not enough. One gets fed up. Vegetable consumption is for every day. Nirmal Ganguly ji. Sir, there are now technologies जो कि vertical technologies बोलते हैं. सिंगापुर, साउथ कोरिया वगैरह इसको यूज करते हैं और उनके पास जमीन नहीं है एंड उनका कंप्लीट फूड प्रोडक्शन इससे जापान में भी है. So there are new technologies which are coming up where in the urban centers you can grow, you can do full agriculture. And we need to learn from Israelis also. They have also the different crop patterns. तो इनका solutions है. और बॉक्स में वीना जी मशरूम ग्रो कर सकते हैं. बॉक्स में मशरूम बहुत अच्छा ग्रो करता है. उसके ऊपर आप एक बॉक्स के ऊपर दूसरा स्टैक भी कर सकते हैं. एंड मशरूम इज वेरी फुल ऑफ प्रोटीन. और हमारे यहाँ एक जगह है जिसको सोलन बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में. वहाँ पर मशरूम रिसर्च सेंटर है. तो they teach it, they provide you the seeds and everything. So फूड का सॉल्यूशन है एक्चुअली. हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते. दिस इज द प्रॉब्लम. रामजी भाई, प्लीज अनम्यूट एंड कम. रामजी भाई. Bijon ji, yes, I am with you. Somebody say ke Bijon ji is looking nice, lovely. I say Bijon ji is always nice. He is a Devanand. देवानंद सर, अब मैं उसको बहुत पुराना गंगुली जी हमारे फैंस गुजरात से हैं. देखिए, फॉर्मर एमपी रामजी भाई, he is a former MP, his wife is also a former MP, both of them. अरे
मैडम नमस्कार, नमस्कार बहन, कैसे हैं आप? बहन बस हम दोनों सर, आप कैसे हैं? वेरी कितने गुड। दिन बहुत बाद दर्शन हुआ। नहीं आप आप लोग आ आते गए, दर्शन हो गया। गुजरात में आते नहीं हो और कहीं बुलाते नहीं हो। नहीं आएंगे, अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी। सर ये रिगार्डिंग फूड माय एक्सपीरियंस गुजरात, अभी गुजरात के स्पीकर ने कहा है गुजराती में सबसे ज्यादा फूड की वजह से कैंसर, हार्ट अटैक, हर रोज हार्ट अटैक 8 से 10 लोग गुजरात में हार्ट अटैक से मरते हैं। तो मैं चाहता हूं कि फूड एडल्ट्रेशन के जो बिल है, एक्ट है, उसको कुछ स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेबोरेटरी एवरीवेयर, लेबोरेटरी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, मे बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि फूड एडल्ट्रेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली इन गुजरात एंड पर्टिकुलरली इन ग्लोबल आल्सो। तो अवेयरनेस रिगार्डिंग फूड, बट अवेयरनेस रिगार्डिंग क्वालिटी मस्ट बी देयर। गांगुली जी आप रेस्पॉन्ड जैसा फूड सेफ्टी लेबोरेटरीज ढेर सारे खोले गए हैं। अब पहले नहीं होते थे। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज होता था, बट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज नहीं होते थे। एट दिस टाइम फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज की अबंडेंस है, बट कुछ चीजें और आ गई हैं। जैसे अभी 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 हमारे विजन जी बोल रहे थे कि स्टेट उसमें वो है, देयर आर सम गड़बड़ ऑल्सो। ये जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं, वो एक्सटॉर्शन भी करते हैं। वो जाके कुछ पकड़ के उसमें कुछ डाल के फिर आपस में समझौता करने की कोशिश करते हैं। We need to have our regulation very nicely done and very nicely regulated, but food testing laboratories अभी है। और एक और चीज से मैं खत्म करना चाहूंगा, बिकॉज अभी हम लोग कम्युनिटी को पता रहना चाहिए कि उसको क्या फायदा हो रहा है जो भी आप कर रहे हो। अगर लोगों को ये नहीं पता चलता कि क्या फायदा होगा, तो वो उसको इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब लातूर और बीड में जब प्लेग हुआ, तो वहां पर जो फूड स्टोरेज था, इस सब ने प्रॉब्लम किया। उसमें रैट्स आ गए, उन्होंने प्रॉब्लम किया। बट उस वक्त हम लोगों ने कई नई चीजें की, और एक हमने वो भी किया कि हर गांव में लैट्रीन्स होनी चाहिए। और उन लैट्रीन्स को अगर आप नहीं बनाओगे तो आप पंचायती इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे। ये रूल भी हुआ। लेकिन लोगों ने उन लैट्रीन में अपना ग्रेन स्टोर करना शुरू कर दिया, बिकॉज उनको लैट्रीन से कोई फायदा नजर नहीं आया। तब हम लोगों ने, क्योंकि वो मैदानों में जाते थे, लैट्रीन की जरूरत नहीं थी, तो हमने फिर एक डिजाइन किया जिसमें कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट अलग हो जाता था। और लिक्विड वेस्ट टैंक्स में जमा होते थे, और लिक्विड वेस्ट वाज द यूरिन एंड दिस साइड वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें प्रोटीन्स भी बहुत है, इसमें तत्व है जो कि फूड को अच्छे तरह से उगाता है। और इसमें एंटीसेप्टिक्स भी है। और ऑर्गेनिक फूड के उसमें हम लोगों ने किया था। हम एक बार कानपुर देहात में गए थे, तो वहां पर जो टीचर है बच्चों को पढ़ाते हैं, बोलते हैं ना तो पंखा चलता है ना तो लाइट है, किचन में बायोमास फ्यूल होता था। तो दी कम्युनिटी डिडंट वांट टू सेंड देयर कैटल फॉर स्लॉटर, तो हम लोगों ने एक शेड बना दिया जिनमें कि कैटल्स रहते थे। अब वहां पर हमने बायोगैस प्लांट गवर्नमेंट से लेके लगवा दिए, जिसके लिए पैसा खर्च नहीं होता था। और जो वेस्ट होता था उससे गैस निकलता था, उससे स्कूल में फैन चलने लगे, लाइट जलने लगी, हर घर में किचन में कनेक्शन हो गया। और जो चारा होता था गायों का वो भी होने लगा, और जो एफ्लुएंट था उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग होने लगी, उनकी इनकम बढ़ गई। तो जब भी कम्युनिटी को पता चलता है कि हमें इससे कुछ फायदा होता है, वो उसमें भाग लेते हैं। एक और पॉइंट बोला गया था, मैं उसको उभारना चाहूंगा। जैसे फूड कलर्स हैं, फूड कलर्स में बहुत टॉक्सिसिटी होती है, उसके मापदंड बना दिए गए। बट ऑर्गेनिक कलर्स आर आल्सो देयर, and organic colors should be encouraged to be used in the food and the sweet, particularly in the sweets. गुंजन जी अनम्यूट करके आइए। गुंजन जी आपने हाथ उठाए हैं। गुंजन गुप्ता। अच्छा, अनिल जौहरी जी, I would like you to please come and give your views and comments. Anil Jauhari ji, if you are there. Dada, I'm there, but unfortunately I joined very late, so I haven't heard much of the conversation. So I would rather... Whatever you have heard, you want to give any comments? Not at this stage.
Thank Okay. you. Lavi ji, Lavi Hello. Tikka, consumer Hello. activist from Lucknow. Lavi Tikka ji. हेलो गुंजन हाँ, गुप्ता आइए जी। गुंजन जी, बताइए आप कहाँ गायब हो गए थे? आपको बुला रहे थे, आप बात नहीं कर रहे थे। गुंजन जी बताइए। अनम्यूट करने में समय लग गया। ओहो, अच्छा चलिए, हाँ। बताइए आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, इसमें आप लोगों ने होलसम फूड में काफी कुछ कवर किया, जैसे मेनली जीएम और पेस्टिसाइड के इश्यूज, लेकिन जंक फूड वाला इशू मुझे लगता है छूट गया है, और ये जंक फूड का मार्केट बहुत बड़ा है कंपेयर टू द होलसम फूड। तो इस पे लोगों की शिफ्टिंग करना जरूरी है टू गेट बेटर हेल्थ। वेरी गुड, ये पॉइंट जरूरी है। वेरी गुड। लोग नंदुनी जी थोड़ा सा जंक फूड टच किए थे उसको लेकर, जब नेगियो जी को मिले थे पेप्सी को में कि हाउ बेवरेजेस शुड बी मेड मोर हेल्दी, उन्होंने उसको टच किया था, जहाँ सॉल्ट, शुगर एंड फैट का कंटेंट को मतलब मॉनिटर करना चाहिए फॉर स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन, एंड स्कूल कैंटीन्स में इस ढंग का रेगुलेशंस लानी चाहिए जहाँ पर sugar, fat and salt content should be measured and monitored. So anyway, that's a good question you have raised. मुझे लगता है कि इसके लिए पैकेज फूड को रवि टिक्का जी, आप आना चाहते हैं? नहीं तो हम इशाक खान जी के पास जाएंगे। इशाक खान जी, आप प्लीज अनम्यूट करके आइए। सर मैं आना चाहती हूँ। हाँ प्लीज 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 आइए। जय हिंद। सर मैं स्वीटी पॉल। हेलो हेलो स्वीटी, प्लीज आइए, प्लीज आइए। सर मैं ग्रुप में सबको मेरा प्रणाम। और सर मैं सुन रही हूँ बहुत देर से। सर मैंने इन सब चीज़ों को सुनने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि आज से बहुत टाइम पहले, मतलब जब हम लोग छोटे थे, तब से मैंने ये चीज़ देखी है कि फूड को इम्पोर्टेंस तो दी जाती थी। वो इसलिए दी जाती थी कि फूड्स है तो सब कुछ है। और पहले का इंसान, जो हमारे बड़े थे, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे बच्चे थे, जो भी हम लोग फैमिली भाई बहन थे, हमारी एक एनर्जी वाली बॉडी स्टेब्लिश होती थी। वो इसलिए कि हमारा फूड बहुत अच्छा होता था। और फूड अच्छा होने का कारण यही था कि घर में सिंपल खाना होता था, और जो फूड आता था ना वो बहुत प्योर होता था, जिसमें कि देसी घी, सरसों का तेल, बहुत एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें हैं। लेकिन आज के टाइम में जो है, हर चीज में एक तो मिलावट है, और हर एक इंसान को ये बताना पॉसिबल नहीं है कि भी तो ये फूड मत खाओ, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है जो आपको ग्रोथ देता है, और वही अच्छा नहीं होगा तो फिर हम कैसे बढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन में जो चीज मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि अब जो खाना है वो प्योर नहीं है। प्योर ना होने की वजह से उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा जो हमारा जंक फूड आ गया, इसने तो बिल्कुल ही अलग सा ही रूप ले लिया है हमारा। तो अब फूड के बारे में अब बताया जा रहा है घर में ग्रो करो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिलवास जी, कि आप कोई बोलना चाहेंगे? बिलवास जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? You have to unmute and come. Yeah. I was just reading, though junk food is not the major area of our focus, but we do promote. In fact, we have a song in Marathi and in Hindi on nutritious food for children, school children. And it's on our, we have about 30-40 videos on our Sahayak Trust website. So one can go to it, and Very also good, for very women. good. Thank you. So, Thank you very much. but what I wanted to say is that I just read somewhere that in certain countries, the government itself is giving star system. That is the healthiest food, the less healthy, based on this salt, sugar, refined flour, whatever is the components. So it is very easy for the consumer or the mother to know that this is less healthy, this is more healthy. And today we are only being advised by the companies who manufacture the food. Oh, this is a very healthy drink. And when you go into it, you find it is full of sugar. So those of you who can influence the FSSAI, let us think in terms of a system of classification, because reading all the fine print on the back of the package
Even with my specs, I cannot read it sometimes. Very difficult. Yeah, So, I agree with you. Yeah. Thank you very much. We are absolutely run out of time. We have gone much beyond our time. And before I request Beena ji to propose the vote of thanks, I just want to conclude by saying मैं एक that छोटा सा जी एक ईशा छोटी खान, सी बात करना हम आपका नाम लिए थे, आप थे नहीं उस समय। चलिए हेलो ईशा खान, हाँ ईशा खान जी प्लीज आइए। जी सर जी जय हिंद सर और नमस्कार आप सभी को। और दरअसल मैं सर, आप जानते हैं मैं तो गांव से जुड़ा हुआ हूं, अखड़ आदिवासी इलाके से जुड़ा हुआ हूं। तो जब कभी कुछ कहने या कुछ कहने पहुंचाने की बात होती है तो मैं अक्सर अपने गांव ग्रामीण परिवेश में पहुंच जाता हूं। तो गांव के लोग जो हैं सर, 140-45 करोड़ में से 80 करोड़ जनता को अनाज मिल रहे हैं गांव में, ये बहुत अच्छी बात है। और गांव का जो ग्रामीण वासी है मोटी रोटी बना करके और अपने खेत से चने का पत्ता तोड़ करके या सरसों का 4-6 पत्ता तोड़ करके उसमें नमक मिर्च लगा करके वो खा करके चल देता है। उनके लिए आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का अधिकार कितना मायने रखता है, ये सवाल है सर। ये बिल्कुल बिल्कुल। निर्मल गांगुली जी आप जवाब देंगे या दिलनवाज जी आप जवाब देंगे? एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही कहते हैं। हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक वक्तव्य नहीं रखा कि हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस, हमारे माइक्रोब्स जो हमारे इंटेस्टाइन में म्यूकोसल सर्कुलेशन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। और अब इसका साइंस इतना बड़ा है कि अब हमें पता चला है कि हमारे ट्रेडिशनल फूड्स में ये काफ़ी होता है, पर्टिकुलरली जो फूड्स ग्रामीण एरिया में व्यवहार होते हैं, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो जैसे नॉर्थ ईस्ट में जितने फर्मेंटेड फूड के वैरायटीज होते हैं, इवन इडली वगैरह जो फर्मेंटेड फूड होते हैं जो साउथ इंडिया में होते हैं, ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। और ट्रेडिशनल फूड्स में इनकी ये अगर हमारे फूड बास्केट में आए तो हमें बहुत फायदा होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो चीजें ट्रेडिशनली यूज होती थी, जैसे थोड़ा सा दूध में थोड़ा सा हल्दी मिलाया जाता था, उससे भी बहुत फायदा होता है। जैसे राजस्थान में आपको बोलूं कि एक एक कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं राइका। राजस्थान में बहुत ज्यादा डायबिटीज है, वो कैमल का मिल्क पीते हैं और वो सिर्फ कैमल का ही पीते हैं, उनमें डायबिटीज है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। और गांधी जी हमारे वो पीते थे, हमारे गोट का मिल्क पीते थे। तो गोट के मिल्क में, क्योंकि उनको काउ मिल्क से वो इंटॉलरेंस था, लैक्टोज इंटॉलरेंस था, बट गोट मिल्क में इतने तत्व है, पर्टिकुलरली डेंगू के अगेंस्ट या दूसरे चीजों के अगेंस्ट, कि इन चीजों में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो गांव का नॉलेज है, गांव का जो फूड है। अब ये जो गुजरात में सेठ साहब हैं जो लोग थे, यहाँ का जो फूड आइटम्स थे, इनमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता था, बट ये महीनों रह जाते थे बिना सड़े हुए, बिना खराब हुए। और इनको लेके लोग ट्रैवल में जाते थे, लोग काम धंधे में जाते थे। तो जब हम फूड की बात कर रहे हैं, और जो हम लोग के बाजरे की रोटी थी जो कि लोग खाते थे साग के साथ गांव में, मैं जब मथुरा में रहता था तो हमारे नेबर खिलाती थी, उसके बाद कभी खाने का मौका नहीं, बिकॉज बथुआ का साग और बाजरे की रोटी, वो जैसे सरसों का साग मक्के की रोटी उसी टाइप उसी क्वालिटी की है। बट इन चीजों को हमने उभारा नहीं है। तो हमें चाहिए है कि हमारे जो ट्रेडिशनल फूड नॉलेज है, जिसमें फाइबर्स है, जिसमें कि अच्छे तत्व हैं, उनको हम मान्यता दें और उसके बारे में बोले भी लोगों के साथ। हम लोगों को कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पाते। आज का जो भी भाषा हम लोगों ने यूज किया वो गांव के लोगों को समझ में नहीं आएगा, और वो उसको सोचेंगे कि ये बहुत ऊंची ऊंची बातें बोल रहे हैं, तो ये तो हमारे समझ के बाहर है। हमारे अंदर जो भाषा की दक्षता होनी चाहिए, जिससे कि हम ऐसे भाषा में लोगों से बात कर सकें कि उनको समझ में आए, और हमें अपना जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अगर हम नहीं पहुंचा पाते
तो बहुत बिल्कुल सही, प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले हैं। दिलवास जी, you want to say something before I request Bina ji to propose the vote of thanks? थैंक यू सर मैं एक बात कहना Thank you चाहता very हूँ much, सर। Bijan थैंक ji. यू वेरी मच। मैं 2 मिनट लूंगा। ओके ओके, सुजीत सिंह जी आइए हाँ प्लीज, प्लीज आइए। हम लोग बिल्कुल टाइम से बाहर निकल गए हैं, बहुत हाँ लंबा हो गया। हाँ मैं थोड़ा दूसरी दिशा दिखाना चाहता हूँ। ये अभी जैसे बोला है कि हम शहरी आदमी अपनी हम आधी से ज्यादा का तकरीबन 3/4 हम अपनी एज गुजार चुके हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। हम जो है शहर के बच्चे हैं और हमारी जो जनरेशन है वो गांव में रहती नहीं, उन्हें किसानी आती नहीं है। तो ये बातें उनके लिए नहीं है, वो तो आज ऑनलाइन में बुलाएंगे, उन्हें समझ आएंगी कि आज किसी के घर में बहू बेटी भी किचन में जाने को तैयार नहीं है। तो हम प्रैक्टिकली देखें कि आज क्या बात है, जिसको मैं कर रहा हूं प्रैक्टिकल, कि फैक्ट्रियों में जाता हूं, फैक्ट्री के अंदर जितनी भी लेबर है वो गांव से आई हुई होती है और उन्हीं को ही किसान के बारे में बताते हैं। वो जैसे छुट्टी होती है, आज फसल लगानी है, होली है, दिवाली में वो अपने गांव जाते हैं और तो उनको इस बारे में बताना चाहिए और खेती बाड़ी का एक इंडस्ट्री के रूप में बताना चाहिए। और जैसे ट्रैक्टर है या और कितनी चीजें हैं, उसको मैंने उन्हें बोला कि आप अपना बिजनेस करो, दिल्ली के अंदर या बड़े शहरों में माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप किराए पे दो और अपनी आमदन बनाओ, जिसका छोटा खेत है वहां पे जाके उस हिसाब से करें। तो हमें अपने हिसाब से उन लोगों को इनकरेज करें कि वो इसको इंडस्ट्री के रूप के अंदर लें, उनकी आर्थिक सुविधा भी बढ़ेगी, नई चीजें भी बनेंगी। और ये जो अभी बोला 80 करोड़ का हम खाना दे रहे हैं, ये शोभनीय बात नहीं है। मुझे तो अपने पे तरस आ रहा है कि मेरे देश के लोग को अभी अपना खाना नहीं खा सकते, हमें उन्हें खाना देना पड़ रहा है। तो ये हमारी वीकनेस है, हमारी बड़प्पन नहीं है। इससे 80 करोड़ को 8 करोड़ तक लाना है हमें, वो तभी पॉसिबल है। हम इसको इंडस्ट्री करें और जो भी फैक्ट्री के अंदर है, जैसे मे डे होता है, विश्वकर्मा डे होता है, उस दिन सबको इकट्ठा करके हम उनको एजुकेट करें। ये मैं खुद कर रहा हूं और अलग अलग फैक्ट्री में जाकर कभी मुझे बुलाया जाता है तो मैं इस बात को कहता हूं और उसी से कितना असर होगा वो अभी तो नजर नहीं आया, पर मेरी एक अपना पर्सनल व्यू है कि हम इस पॉइंट पे भी देंगे। बिल्कुल सही। हम लोग को हजारों सुजीत सिंह बनाना चाहिए देश में, ताकि वो पहले इस प्रचार करें, इस ढंग के बातों को लोगों तक पहुंचाएं। ये बहुत जरूरी है। बिफोर आई रिक्वेस्ट बीना जी टू कम इन टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स, हम कंक्लूड ये करना चाहेंगे कि आज का चर्चा से ये बात निकल कर आया, उभर कर आया कि हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि एक अच्छा सर्वेलेंस मैकेनिज्म हो देश में, ताकि हम जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो नहीं जान कार्य प्राप्त कर पा रहे हैं, हमारे तक सरकार का जिम्मेदारी है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी का जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक इस बातों को पहुंचाए, उस भाषा में पहुंचाए जिस भाषा में लोग चाहते हैं, उस ढंग से पहुंचाए जिस ढंग से लोग चाहते हैं। ये नहीं कि जिस ढंग से हम चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जिस ढंग से हम बोलना चाहेंगे उस ढंग से नहीं, जिस ढंग से लोग चाहते हैं उस ढंग से होना चाहिए। सर्वेलेंस होनी चाहिए, उसका रिपोर्ट पारदर्शिता के साथ लाना चाहिए सामने और उत्तरदायित्व होनी चाहिए। जो सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं उनको उत्तरदायित्व होनी चाहिए कि वो यदि कहीं पर भी चूक रहे हैं उनके ऊपर वो जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि उनको अकाउंटेबिलिटी हो। तो आज हम लोग जो चर्चा किए हैं, हम पहले तो थैंक यू वेरी मच और हम रिक्वेस्ट करेंगे बीना जी को, जो चेयरमैन है फाउंडेशन के। बीना मिश्रा जी, आइए। मिश्रा जी, अरे मैं कुछ भाई अभी हम लोग चलिए चलिए बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जो संडे को कोई भी सब्जेक्ट होता है तो मन्ना जी हमारे से ही उसका समापन करते हैं। मतलब ये है कि हम जो लाफ्टर योगा कराते हैं तो उसी सब्जेक्ट पे ही कराते हैं। अब टाइम बहुत कम है तो मिश्रा जी मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का सब्जेक्ट था कि भाई फूड, तो सेफ फूड और स्टेल फूड, मैंने जंक फूड को स्टेल कह दिया, सेफ फूड और स्टेल फूड। So everybody should say yes to safe food. So Yes. everybody should say yes, yes. Yes. Yes to safe food. Wholesome food. and no to junk food. No to stale food. थैंक यू थैंक यू। मिश्रा जी को जैसे बोला था सबने कि बहुत ही अच्छे लग रहे हो और देवानंद लग रहे हो, तो मैं एक
एक आपके लिए देवानंद ऐसे ऐसे अपना एक्टिंग करते थे, तो सभी गहरा सांस लेंगे, सभी गहरा सांस लेंगे और उसको जब छोड़ेंगे तो देवानंद बन जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ देवानंद तो चले गए, ये तो अनिल कपूर बन रहे हैं। नहीं, किसी ने बोला था कि देवन तो मैं क्या देव, अब तो ये अनिल कपूर हैं। बीना जी हाँ, आइए, अनिल कपूर है। यस यस यस। बीना जी थैंक प्लीज यू। अनम्यूट करके, बीना जी प्लीज आइए। बीना जी वोट ऑफ थैंक्स प्लीज दीजिए। अभी कोई और को भी आप बुलवाना है तो तभी मैं शुरू करूं। नहीं, थैंक यू वेरी मच बिजॉन जी। आज का जो सारा डिस्कशन हुआ है, इट्स वेरी वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी नाइस। एंड डॉक्टर गंगोली से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही ज्यादा मुझे आपने जो कोई कहा मुझे बेहद अच्छा लगा। यू आर द मास्टर फॉर ऑल दिस थिंग्स एंड आई हैव नो वर्ड टू अप्रिशिएट योर क्लियरिटी फॉर फूड एंड एवरीथिंग। बहुत ही सुंदर तरीके से। और कभी अगर मुझे मौका मिला तो आपके पास बैठ के मैं कुछ पॉइंट्स भी लिखना चाहूंगी, क्योंकि फूड सेफ्टी के लिए जो हम कह रहे हैं, हमने यहाँ डिस्कस भी किया है सबने, कि हमको ये छोटे लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि खेत की बात, गांव की बात कुछ लोगों ने करी है, मगर यहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें जो झुग्गी क्लस्टर हैं, हमको ये उन तक भी पहुंचाना है, क्योंकि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आपने जो इतना सुंदर तरह से एक्सप्लेन किया है गंगोली साहब, डॉक्टर गंगोली, ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है और बड़ी क्लियरिटी है उसके अंदर। और डॉक्टर वरियाना वाह, जो अब मैं आपसे पहली दफे मुलाकात मेरी हुई है, मगर आपने जो कुछ भी बताया वो बहुत अच्छा बताया और इसको हम फॉलो करने की कोशिश भी करेंगे। और अगर आप इजाजत दें और मुझे अपना फोन नंबर दें, तो मेरे वहाँ बॉम्बे में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी ब्रांच के लोग हैं, आई एम वेरी एक्टिव ऑल्सो, तो वो आपसे संपर्क करेंगे और हम एक बुकलेट बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने की उनकी लैंग्वेज में, उनको बताने के लिए कि कौन सा फूड उनको खाना चाहिए, उसमें क्या क्या है उस फूड, जितना वो खाते हैं, हम एक मील में जितना खाना खाते हैं उतना हमको क्या मिलता है उसके अंदर। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम कहीं पढ़ लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो उसमें हम क्या है उसको खाते ही रहते हैं, तो वो एक्सेस में हो जाती है। तो ये एक मैसेज हमको पहुंचाना चाहिए लोगों के लिए कि सारी चीजों को जो है हम इक्वली खाएं, जो करें, ये नहीं एक की पीछे पड़ जाए। और आज के जितने भी स्पीकर जिन्होंने क्वेश्चन भी पूछे, उनके बड़े वैल्यूएबल क्वेश्चंस थे और बहुत ही बढ़िया थे। बिजॉन जी, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस चीज को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो हम देश की और अपनी जनरेशन की बहुत सेवा कर सकते हैं, क्योंकि फूड ही ऐसी चीज है कि हमने बहुत वेबिनार और वो किए हैं हेल्थ के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, मगर क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं? फूड इज द मेन थिंग। तरह तरह की हमारे पास जो समझ डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं, उस तरीके की बीमारियां जो आज हो रही हैं, वो फूड उसका एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और अगर हम उस कारण को रोकेंगे तो आगे कहीं भी हमारी जनता, हमारी जनरेशन, हमारी यंगर जनरेशन वो हेल्दी होगी। और जैसे अभी हमारे किसी स्पीकर ने कहा था कि राइस जो है वो कहाँ कहाँ का अच्छा होता है, या वो बादाम जो किसी के बारे में कहा था कि वो वहाँ का अच्छा होता है, बाकी अच्छा नहीं होता है। तो दूसरी कंट्रीज चाहती नहीं है कि हमारी जिस तरीके से कंट्री ऊपर उठ रही है, बढ़ रही है आगे के लिए, कि हमारे लोग आगे जाएं और बहुत बढ़िया ये देश नंबर 1 बन जाए। तो मैंने अपनी ये ओपिनियन रखी है। मुझे नहीं पता इस प्लेटफॉर्म पे मुझको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, मगर बिजॉन जी, जो आपका रास्ता है, जो आपका थिंकिंग है, जो आप गाइड करते हैं, मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि जब तक मैं हूँ, मैं उसके साथ हूँ, कि आई एम कंसर्न कि हमारे लोगों की हेल्थ बहुत बढ़िया हो। एंड हमारे प्रफुल्ल भाई जी ने जो शुरू किया है, उल्टी चल रही हूँ मैं वैसे, मगर मुझे प्रफुल्ल भाई जी ने जो गीता के श्लोक से शुरू किया है, दैट वाज वंडरफुल। एंड मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने पार्टिसिपेट किया और अवेयर किया सब लोगों को, और उससे मुझे तो बहुत सीखने को मिला है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू बीना जी। हम अब माइक उदय मन्ना जी को सौंपना चाहते हैं और बैक एंड टेक्निकल टीम काइंडली कंक्लूड द सेशन इन योर ट्रेडिशनल मैनर। उदय मन्ना जी। जय हिंद सर। आप जय सभी लोगों को सादर नमस्कार। सकारात्मक भारत उदय के जो आंदोलन है वो एंड नहीं होता है, क्योंकि 2047 तक की हर वेबिनार के बाद एक नई शुरुआत होती है और नई शुरुआत में हम लोग जानकारी देते हैं कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। तो संडे को वेबिनार 11 बजे होता है, लेकिन शाम को चूंकि एनआरआई कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो शाम को हम लोग 6 बजे से वेबिनार करते हैं। तो 2 दिसंबर सोमवार है, तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके क्या हैं उस पर साधक ओम प्रकाश जी हमारे सह आयोजक होंगे और वेबिनार होगा। बुजुर्गों की देखभाल बुजुर्ग प्रियजनों की देखभाल पर 5 दिसंबर को 6 बजे शाम को वेबिनार स्वीटी पॉल जी जो जुड़ी हुई हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की हैं आरजेएस पीबीएच की, वो सह आयोजक हैं। और 8 दिसंबर को हम लोग फौजियों का कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं और मुझे याद है कि ये पहला ऐसा, हम लोगों ने श्रद्धांजलि तो दी है फौजियों को, लेकिन पहला ऐसा प्रोग्राम होगा, पूरा मंच सुशोभित होगा शहीद परिवारों से और सैनिकों की गरिमा पर होगा, शहीद वीरों पर होगा। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस को लेकर मुनि इंटरनेशनल स्कूल के डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर जी हैं, वो मानवीय मूल्यों में परिवार की भूमिका पर वेबिनार करेंगे। और आचार्य प्रेम भाटिया जी, अभी प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की थी, तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर भी हम लोग करने जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि विजन मिश्रा जी भी इसमें उपस्थित हों। ये 12 दिसंबर को शाम को 6 बजे से होगा। और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। आप जानते हैं कि 15 जनवरी को, जैसा प्रफुल्ल शेठ जी ने कहा, कि हम लोग आईएनएस कॉन्फ्रेंस हॉल रफी मार्ग नई दिल्ली में करने जा रहे हैं 15 जनवरी 2025 में एनआरआई कॉन्फ्रेंस और मीडिया कॉन्फ्रेंस। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को लेकर हम चाहेंगे कि सभी आरजेएस जो हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, वो जुड़े शाम को 6 बजे 18 दिसंबर को। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी उसके को ऑर्गेनाइजर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है हम लोग मनाएंगे 22 दिसंबर को। सुरजीत सिंह दीदेवार जी जुड़े हुए हैं, उस दिन के सह आयोजक हैं। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस है, आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी जुड़े हुए हैं। और जीवन संध्या का स्वर्णिम भविष्य, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बीच में एक और चीज चर्चा करना चाहूंगा, 25 से पहले 23 दिसंबर को हम लोग शाम को 6 बजे राष्ट्रीय किसान दिवस पर इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग ने 29 नवंबर को प्राकृतिक खेती पर किया था, जो सरकार ने मंजूरी दी है प्राकृतिक खेती के मिशन को, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा में भी जो बातें आ रही हैं उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को मनाते हुए। और लास्ट में हम लोग हंसी खुशी और जो लाफ्टर योगा को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, जैसे कि कुलदीप राय जी ने कहा, और हंसी खुशी का माहौल बनाया, तो हम लोग 31 दिसंबर को शाम को हंसी खुशी के माहौल के साथ गीत संगीत और कविता पाठ, उसमें गायक भी आएंगे, कविता पाठ भी होगा। इसके सह आयोजक सत्येंद्र त्यागी जी हैं, जो कि जुड़े हुए भी हैं, और सुमन त्यागी जी। तो इस तरह से ये हम लोगों का अगला कार्यक्रम जो है इस तरह से होगा। 2 दिसंबर का टेक्निकल टीम, ये एडिशनल डायरेक्टर सीपीसीबी के फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जो हैं वो आएंगे, डॉक्टर दीपेंद्र शाह जी और एम शाह हुसैन जी, जो बायोडाइवर्सिटी डीडीए के जो पार्क हैं उसके इंचार्ज हैं, और साधक ओम प्रकाश जी पटना से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करेंगे। आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग ऐसे ऐसे विषयों को हम लोगों को दीजिए, टॉपिक दीजिए, ताकि ये 2047 तक ये जो इतिहास बन रहा है उसमें आपकी भी भागीदारी हो, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और 15 जनवरी को आरजेएस की 4थी पुस्तक का विमोचन होगा। तो मैं सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए और टेक्निकल टीम का धन्यवाद करते हुए, जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सॉन्ग के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए,
सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।